Hi guys. Now let us start with Cobb Douglas. Cobb Douglas के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और डायग्राम करेंगे. So in this video हम लोग Cobb Douglas के न्यूमेरिकल्स करेंगे from Hicks and Slutsky both and डायग्राम करेंगे for Hicks and Slutsky both. ठीक है? Let's do a couple of examples for those. The first example is, let's say u is equal to xy subject to 2x plus 5y is equal to 100 and price of good 1 falls to ₹1. We understand the question? हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, फंक्शन सेम रहेगा. I have 2x plus 5y is equal to 100, p1 falls to 1. So सबसे पहले हम करते हैं स्लट्सकी. Now know that स्लट्सकी हो या हिक्स हो, हमारा E0 और E1 जो है वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारी बजट लाइन AB और AB1 तो दोनों के लिए सेम ही है. AB पे आई हैव ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल इनकम, AB1 पे आई हैव न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल इनकम. इसमें तो अभी हमारा प्राइस इफेक्ट है ना, दिस जर्नी इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट. इसके अंदर हिक्स और स्लट्सकी का कोई लेना देना ही नहीं है. आई एम रीआइटरेटिंग, हिक्स और स्लट्सकी के बीच में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज द वे दे व्यू परचेजिंग पावर. द डिफरेंस इज वो किस तरीके से परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करते हैं. इसके अलावा हिक्स और स्लट्सकी में कोई डिफरेंस नहीं है. सो हिक्स एंड स्लट्सकी डू नॉट कमेंट अबाउट प्राइस इफेक्ट बीइंग डिफरेंट. भाई जो कंज्यूमर ने चेंज किया वो तो कंज्यूमर ने चेंज किया ही ना. तो उस चेंज का जो डिकम्पोजिशन है, उस चेंज का जो डिविजन है बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, उसमें स्लट्सकी और हिक्स डिफर करते हैं. वो भी इसलिए डिफर करते हैं क्योंकि उनका जो तरीका है परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करने का वो अलग है. बट एसेंशियली जो परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग पावर का थ्योरी है, जो कॉन्स्टेंसी है, वो तो दोनों की सेम ही है ना. बोथ टॉक अबाउट कॉन्स्टेंसी ऑफ परचेजिंग पावर टू फिगर आउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. दोनों ने बोला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करना पड़ेगा. बट वो परचेजिंग पावर कांस्टेंट होगी कैसे, उसमें हिक्स और स्लट्सकी जो है वो डिफर करते हैं. बट E0 to E1 is the same journey. So let's figure out E0. We have to maximize u is equal to xy subject to the budget line 2x plus 5y is equal to 100. हमें पता है फंक्शन कॉब डगलस है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज एट द टेंजेंसी. You see, हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बार बार यूज कर रहे हैं, विच मीन्स आपका जो डिमांड का चैप्टर है और यूटिलिटी का चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आपका वो क्लैरिटी नहीं है तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि मुझे टेंजेंसी कंडीशन लगानी है कि कौन सी कंडीशन लगानी है. हर एक पे तो टेंजेंसी कंडीशन नहीं लगती, right? Which is why those chapters were important, है ना? So now I know that it's the tangency, so I know my equilibrium will be where MRS is equal to the price ratio. This is true for both E0 and E1. The only difference is at E1 I'm maximizing u is equal to xy utility function subject to a budget constraint which is x plus 5y is equal to 100. Old price, new price, same income, same everything else. So let's find out. So E0 will be y by x is equal to 2 by 5. So y is equal to 2 by 5x. 2x plus 5y, y की जगह can I write 2 by 5x is equal to 100. 5 and 5 gets cancelled. X is 100 by 4, which is 25, and y is 2 by 5 into 25, which is 10. So my original bundle is 25, 10. E1 is y by x is equal to 1 by 5. So y is equal to x by 5. X plus 5 into x by 5 is equal to 100, which means x is 100 by 2, which is 50, and y is 10. So the new bundle is 50, 10. So ये मेरा है E0, ये मेरा है E1. Now let's figure out स्लट्सकी एंड हिक्स दोनों को कंपेयर करके E0 डैश. सो स्लट्सकी का E0 डैश एंड हिक्स का E0 डैश. सो सबसे पहले स्लट्सकी का करते हैं. स्लट्सकीज M डैश इज विच मेक्स E0 जस्ट अफोर्डेबल, है ना. स्लट्सकी का M डैश इज विच मेक्स E0 जस्ट अफोर्डेबल एट न्यू prices.
E not just affordable at new prices. एक मेथड मैंने आपके साथ किया था. I'm doing another method. I find this method better because इसमें ना कोई confusion नहीं है. M dash is P1 dash x1 plus P2 x2. P1 dash is 1. X1 is given here. This one, 25 comma 10 into 25 plus 5 into the original bundle, which is 10. ठीक है. So x1 is this, x1 x2 is what is at E naught. So this makes my income to be 75. So then I have to maximize u is equal to xy subject to the new prices, which is x plus 5y is equal to the m dash, which is 75. So y by x is equal to 1 by 5, which means y is equal to x by 5. X plus 5y, x plus 5y, y is nothing but x by 5 is equal to 75, which implies that x is equal to 37.5 and y is equal to 37.5 upon 5, which is 7.5. So my this bundle is 37.5 comma 7.5. 37.5 comma 7.5. I will come to Hicks in a bit. Let's plot this one first. Let's plot Slutsky first completely. ठीक है, Slutsky को पूरा finish करते हैं ताकि Slutsky में confusion ना हो, क्योंकि most of the exam questions are around Slutsky. So originally I'm at AB. AB पे हम consuming the point E naught जो हम calculate कर चुके हैं. E naught is 25 comma 10. So E naught is 25 comma 10. Right. Then I figure out E1, but E naught से हम सीधा E1 पे नहीं जाते. Let's do E naught to E naught dash, and then the journey from E naught dash to E1. ठीक है, ये ऐसे plot करते हैं. So then I draw the line CD. CD is parallel to AB1, passing through E naught because it makes E naught just affordable. क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, Slutsky की. तो मेरा E naught dash क्या है? My E naught dash is 37.5 comma 7.5. 37.5 comma 7.5, which means that I will be somewhere here. You can draw the IC yourself. You have to just draw the IC yourself. Like draw the IC yourself, which is like this. So this is E naught dash, which is 37.5 comma 7.5. Now please look carefully. E naught dash मतलब मैं इतना consume कर रही हूँ good 2 और मैं इतना कंज्यूम कर रही हूँ गुड 1 एट ई नॉट डैश. अब CD और AB1 में सिर्फ इनकम इफेक्ट है. CD और AB1 में सिर्फ इनकम इफेक्ट है, विच मीन्स दैट मेरा गुड 1 और गुड 2 अगर नॉर्मल है तो जब मेरी इनकम इंक्रीज करेगी तो मैं नॉर्मल गुड की कंजम्पशन इंक्रीज करूंगी, which means that my x1 should also rise and my x2 should also rise, which is why any normal good should be in this triangle. क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल के बियॉन्ड जाती हूँ, इफ आई एम हियर समवेयर, दैट मीन्स मैं गुड 2 को रिड्यूस करा रही हूँ, विच मीन्स मेरी गुड 2 जो है वो इंफीरियर या गिवन है. क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से मेरा गुड 2 का कंजम्पशन डिक्रीज कर गया. यू नो, माई गुड 2 इज फॉलिंग. और अगर मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ तो मेरा x1 जो है वो इंफीरियर या गिवन है, क्योंकि इनकम इंक्रीज करने से मेरा कंजम्पशन डिक्रीज हो गया. बट ऐसा नहीं है. कॉब डगलस है. कॉब डगलस में x1 x2 दोनों क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं. अगर x1 x2 दोनों नॉर्मल हैं तो इसका मतलब E1 will lie between this area, and we know E1 का point is nothing but, what's the point of E1 is 50 comma 10. E1's point is nothing but 50 comma 10, which means it is somewhere here. This is my point of E1. This point is nothing but 50 comma 10. So my journey from E naught to E naught dash is substitution effect. The journey from E naught dash to E1 is income effect, right? So that is all there is in Slutsky. I hope ये triangle आपको समझ में आया जो मैंने draw किया Slutsky का, क्योंकि इसके beyond अगर हम जाते हैं यहाँ पे या वहाँ पे तो हमारा दोनों में से एक गुड का कंजम्पशन कम हो जाता है, और इनकम इंक्रीज करने से नॉर्मल गुड का कंजम्पशन इंक्रीज होना ही होना चाहिए, right? So this is how Slutsky is done. Let's talk about Hicks in the similar platform. Hicks के अंदर हम क्या करेंगे? Hicks के अंदर m dash is such that it is tangent
to the same IC. M dash is such that it is tangent to the same IC, which means my utility is constant. So utility at E naught is how much? Utility at E naught is 25 into 10. क्यों? क्योंकि U is equal to X into Y है ना? 25 into 10. So my utility is 250. So जब मैं E naught dash निकालूंगी तो E naught dash पे भी utility मेरी 250 ही होनी चाहिए, except that the point of X will be X dash and the point of Y will be Y dash, which I don't know what it is. Also मुझे ये भी पता है कि मेरे पास जो budget line होगी वो नई वाली होगी, which will be 1 into X plus 5 into Y is equal to some M dash. Let me call this M dash H because ये compensated income है H की. मेरे पास ये constraint है, right? मेरे पास ये constraint है. अब क्या मैं इसको solve कर सकती हूँ? Yes, I know y dash upon x dash is equal to 1 by 5. That means that, can I write y dash to be equal to x dash upon 5? Which means that I can write 250 is equal to x dash into y dash is nothing but x dash upon 5. Which means that x dash square is equal to 250 into 5. Which means x dash is nothing but under root of 5 into 5 into 5. 5 into 5 into 5 into 5 into 2. 5 5 the 25, 25 into 10 is 250 into 5. So that is how now. So this and 2. That means it is 5 into 5. This is 25 under root 2 is my x dash. And similarly my y dash will be 25 under root 2 upon 5. Because it is x dash upon 5, right? Which is 5 root 2. So my E naught dash will be the point, will be 25 root 2 in 5 root 2. So again, let's make the diagram. So अभी मैं initially किस पे हूँ? AB पे हूँ. AB पे मेरा point कौन सा है? E naught, which is nothing but 25, 10. Hicks says that मेरे को purchasing power इस तरीके से compensate करनी है that I want the same IC. So that come from E naught to E naught dash. E naught dash में my point is 25 root 2, 5 root 2. Little more of x, little less of y. Again, मेरा जो E1 आएगा वो इस triangle के अंदर आएगा and E1 is again same as Slutsky which is 50, 10. So I hope this makes sense. हम लोगों ने diagrams कर लिया, numericals कर लिए. I want to do one more numerical for Slutsky ताकि आपको एकदम Slutsky absolutely clear हो जाए. उसके बाद आप उसका Hicks खुद भी try कर सकते हो. नहीं समझ में आएगा तो हमें reach out भी कर सकते हो. I will give you the answer for that one. But I would like you guys to try it yourself. Okay, let's do one more question. U is equal to x square y subject to 2x plus y is equal to 100 and price of good 1 increases to 4. That's the question. E naught, maximize u is equal to x square y subject to this, which means my MRS is 2xy upon x square is equal to 2. This 2 and 2 gets cancelled, this x and x gets cancelled, so that implies that y is equal to x for E naught, which means that x is equal to y is equal to 100 by 3, which is 33.34 approximately. That's my original bundle. My last bundle E1 will be u is equal to x square plus x square y subject to 4x plus y is equal to 100. Again, 2xy upon x square is equal to 4. This is cancelled with 2. This square gets cancelled here. So y is equal to 2x. When y is equal to 2x, then x is nothing but 100 by 6 and y is nothing but 100 by 3. So I have my original bundle, I have my new bundle, I have to only find E naught dash. So let's find E naught dash for Slutsky. Let's find E naught dash for Slutsky. For E naught dash of Slutsky, we have to find M dash. M dash is nothing but new prices
फॉर ई नॉट, यू नो आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं मैं हमेशा ये चीज लिखती हूँ ताकि आपके मन में, आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है। तो न्यू प्राइसेस फॉर द सेम ई नॉट, ई नॉट क्या है 100/3, 100/3। प्राइसेस क्या है 4 into 33.34 प्लस 1 into 33.34, which is means it is nothing but 5 into 100/3. So 500/3, 500/3. So I have to do u is equal to x square y subject to 4x plus y is equal to 500/3. So y is equal to 2x है, हमें पता ही है। So x is nothing but 500 upon 18, 16 to 3 is 18, and y is nothing but 500 upon 6. Sorry, 500 upon 9. 500 upon 9. Alright, so you can calculate these points. This is what Slutsky for this question is. So I hope Cobb Douglas is really clear. आप लोग इसका हिक्स भी ट्राई कर सकते हैं, सेम मेथड लगेगा। आपको सिर्फ ई नॉट डैश को कैसे निकालना है, बाय मेकिंग यूटिलिटी कांस्टेंट। हाउ डू यू मेक यूटिलिटी कांस्टेंट? आप यूटिलिटी निकालते हो ई नॉट पे, उसको बोलते हो कि वो ई नॉट डैश पे भी सेम होगी, and that's it. You just calculate according to the ratio there. So this is was Cobb Douglas. हम यही same analysis, when I say same analysis I mean exactly the same way हम लोग perfect substitutes में भी करेंगे और perfect complements में भी करेंगे और quasi linear में भी करेंगे, before we move on to the other aspects of this chapter which is inferior and given. So in the next video when we do perfect substitutes we will do the same thing. अगर ये समझ ना आए एक बारी में तो प्लीज 2-3 बारी जरूर कर लेना। एक्चुअली एवरी वीडियो शुड बी डन 2 or 3 टाइम्स, और उसके बाद वीडियो बंद करने के बाद क्वेश्चन आपको खुद अपने आप भी सॉल्व करके देखना चाहिए कि एक्चुअली समझ में आया कि नहीं आया, टू मेक द अंडरस्टैंडिंग रियली कंप्लीट।